The peninsula of the Ganga and the Indus, about 2,400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad, are formed by basins of three distinct rivers Indus, Ganga and Brahmaputra, are world's greatest stretches of the flat alluvium and also one of the most densely populated areas. Let's see how it is and where it is. For example, between the Yamuna at Delhi and the Bay of Bengal, nearly 1,600 kilometers away, there is a drop of only 200 meters in elevation. Let's understand this in map. What we see most of the time, the settlement of people, where people settle. Generally, people settle where you have availability of water. Availability of water leads to availability of food production. Availability of food production leads to a good atmosphere, a good temperature, a good humidity and well precipitation, and that leads to best production in your food. If you have food to eat, then you feel good to settle there. Let's understand one thing. Generally, what we see around the world, across the world, for example, London में भी एक river है, Thames. Or for example, Karachi, the Indus River falls where Karachi locates. या आप ये कह सकते हो कि इंडस रिवर के इन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर कराची लोकेट्स. इसका मतलब ये है कि जहां भी पानी की अवेलेबिलिटी है, लोग वहां पे सेटल होना आसान समझते हैं, या यू फील गुड टू सेटल देयर. व्हेन वी सी फॉर एग्जांपल दिल्ली, व्हाट वी सी दिल्ली, we have Yamuna. It will born in somewhere in Uttarakhand and it will flow through Delhi. See, Delhi, you have more population because of Yamuna. When Shah Jahan made Delhi as its capital, thinking यमुना के किनारे में लाल किला बनाऊंगा, तो उसने यमुना के किनारे तो उसने ताजमहल बनाया, बट स्टिल यमुना के किनारे इसने लाल किला location, the Red Fort location is just beside Yamuna. At that time, Yamuna river used to flow in front of Lal Kila. तो जहाँ पे wherever we see availability of water, then people mostly they likely to settle down around a banks of rivers most of the time. In this region, you have Yamuna, availability of water and more population, more settlement, and also you have Ganga. The entire this Ganga, this is called Ganga Plain. This is called Ganga Plain. और जो उत्तर प्रदेश का, this region of Uttar Pradesh and part of entire Bihar and also this Chota Nagpur plateau, or you can say West Bengal and Tista river, the Sikkim and the Brahmaputra, this region, this Arunachal Pradesh region, and this is Garo Khasi, the mountains. You have many small rivers, and also Brahmaputra has so many tributaries here. Here, though the temperature and atmosphere is not friendly with the demography, but still, because availability of food and fresh water, people mostly they likely to settle down around these places. See, in this place, India may compare to other regions, compared to Rajasthan, compared to Gujarat, compared to other parts, Madhya Pradesh. तो यहाँ पे what we see is the more settlement just because availability of water. Availability of water is nothing but availability of food. Availability of food is nothing but it is likely to settle down there. What India Yearbook says, this Yamuna, because of Yamuna and Ganga, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का settlement होता है. तो हम in political reasons we can see, जब the Lok Sabha seats, the MP seats of Lok Sabha is divided on the basis of demography,
तो हम यहाँ पे देखते हैं लोकसभा में 80 प्लस लोकसभा के सीट हैं। कितने? 80 प्लस, मोर देन 80 लोकसभा के सीट हैं। तो जब भी इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को खुलने दो, उत्तर प्रदेश के सीट को ओपन होने दो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उत्तर प्रदेश डिसाइड्स हु विल बिकम योर प्राइम मिनिस्टर। Uttar Pradesh decides who will become your prime minister just because it has more people, more public and more votes. More votes means more percentage of voting that leads to your member of parliament election, and that leads to your political party, and that leads to your the person who is going to select as your prime minister. So what we see is, we have Rajasthan here, right? But in this region you have less settlement, though we have इंदिरा गांधी टनल। राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसका जो नर्दर्न रीजन है वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनल बना हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों का सेटलमेंट कम है। द रीजन बिहाइंड द टेम्परेचर, जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा? ह्यूमिडिटी भी नहीं होगी। ह्यूमिडिटी का ना होना, आपकी फसल का ना होना, फसल का the production of food is lesser comparatively. So see, in this river, in this region you have Luni, you have Mahi here. तो in this region आपने देखा होगा राजस्थान का जो southern region है, southern Rajasthan is more prosperous, more greener than the northern and western Rajasthan. So here what India Airbooks is saying, because of this rivers you have more settlements here, or more demography, which leads to more prosperity and more human resource. So let's understand what India Airbook says in its next this thing. The desert region can be divided into two parts, the great desert and the little desert. The great desert extends from the edge of the run of Kutch beyond the Luni river northward the whole of the Rajasthan Sindh frontier, and runs through this. The little desert extends from the Luni between Jaisalmer and Jodhpur up to the northwestern, and between the great and the little desert lies a barren zone consisting of rocky land cut up to by limestone ridges. So this one we have seen, the run of Kutch and desert we have seen already. Let's move further. The Peninsula Plateau is marked off from the plains of the Ganga and the Indus by a mass of mountains and hill ranges varying from 460 to 1220 meters in height. Prominent among these are the alluvial Vindhya, Satpura, Maikala and Ajanta. The peninsula is flanked on the one off side by the eastern Ghats, where the average elevation is about 610 meters, and on the other by the western Ghats, where it is generally from 915 to 1220 meters, rising in places to over 2440 meters. Between the Western Ghats and the Arabian Sea lies a narrow coastal strips, while between Eastern Ghats and the Bay of Bengal there is a border coastal area. The southern point of the plateau is formed by the Nilgiri Hills, where the Eastern and the Western Ghats meet. The Cardamom Hills lying beyond may be regarded as a continuation of the Western Ghats. See, we have seen already this one, and let's understand the geographical structure. The Indian subcontinent can be divided in three regions: extra-peninsular regions, the Himalayas, Indo-Gangetic Plains, Peninsula region. The present configuration of India is attributed to the collision of Indian plate with the erosion plate around 4 to 5 crore years ago. This collision and later subduction of the Indian plate has resulted in the formation of most picturesque mountain chain in the world. Prior to the collision, the area remained under
marine condition for a long duration and was covered by an. So let's understand what is the meaning of this entire paragraph. In geographical structure, what we see is what India Yearbook is talking about this. How India Yearbook talking about this? See, this what we call it is a Pangea. Pangea. See, this entire shape of the world is called geoid shape. Geoid shape का मतलब क्या है? जमीन का शेप जो है उसको geoid shape कहते हैं. और जमीन का शेप किस तरह का है? Geoid. Geoid is have no meaning. जो ज़मीन का जो शेप है उसी को जोइड कहते हैं और जोइड के शेप को ज़मीन का शेप कहते हैं. तो उसका एक दूसरे का मतलब है. जियो मीन्स व्हाट? जियो, ज्योग्राफी या जियोलॉजी या ज़मीन से जो कनेक्टेड है, ज़मीन की जो भी चीज़ें हैं या अर्थ की जो भी चीज़ें हैं उसको जोइड कहते हैं. दिस इज जोइड. एंड व्हाट वी सी हियर इज अ लॉरेशिया, जो अफ्रीका, यूरोप या एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका, नॉर्थ या साउथ, जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उस जो अभी जो दिखाई दे रहे हैं उन सारे कॉन्टिनेंट्स को अगर हम इस तरीके से जोड़ें, लेट्स सी, इस तरीके से हम जोड़ें तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हो. तो ये हो गया आपका यूरोप का हिस्सा, और ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा, और ये हो गया आपका यूरोप और एशिया का हिस्सा, और ये आपका पूरा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, और ये आपका साउथ अमेरिका, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये इंडियन प्लेट. तो इस चीज़ को, ये आपका छोटा सा अफ्रीका से कटा हुआ मडागास्कर का जो रीजन है उस रीजन को. बिफोर टेलिंग ऑल दिस, लेट मी टेल यू वन थिंग इन क्लियर वर्ड्स. ये हमारी इमेजिनेशन है, यू कैन से ये हमारी थियरी है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन we don't have any evidence of this, but still we get some evidences of, for example, in South Africa, the eastern part of South America and western part of Africa, the southwestern part of Africa, यहाँ पे हमें तो whatever you get, we get sediments, for example fossils and other remains of like ancient remains, whatever we get here is similar to each other. At the same time, whatever we get in this, the Australian plate, and it is also comparatively similar to this, and also this, the Indian plate, it is also similar to this region. So when we see some similarities and somewhere we built a story कि हो सकता है कि उस वक्त मान लो 4 या 5 करोड़ साल पहले हो सकता है कि ये सारे रीजन एक जगह बने हो. तो हम इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि दिस लोरेशिया, दिस गोंडवाना, एट दैट टाइम वी हैड ओनली 2-3 continents, but still we were thinking that we pretend or predict that it might be a one continent and remaining was a one sea. इसमें कोई हकीकत है या नहीं है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, but still we think or we predict or we assume because of some evidences कि हाँ ऐसा हो सकता है. तो उस हो सकता है में क्या हो सकता है? Let's see. In this region, the South and Western Africa, and this cutting of Africa is somewhere, and this cutting of Africa is somewhere similar to South American, the Eastern cut. It is easy to understand कि हाँ, it might be possible the South Africa has been migrated from the South Africa to the north and western part, you can say western part, and it made itself a new continent. And also the Indian plate, how it looks like a triangle. This Indian plate and this space, and we assume that because of Indian plate is kind of a triangle, it might be the part of this region, and because it migrated from this place to Laurentian plate, and
इट मर्ज्ड हियर, हम ये देखते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे आई है। इसका एविडेंस हमें कैसे मिलता है? तो इसका एविडेंस हमें इस तरह से मिलता है कि हम लेट्स सी हाउ इट विल लुक। यू हैव अ कोर, दिस इज योर अर्थ, यू हैव कोर हियर। तो इन दिस रीजन अर्थ का जो यू हैव डिफरेंट पार्ट्स, लेट्स सी इसको कट करके हम एक छोटा सा समझ लेते हैं। यू हैव दिस वन इज अ कोर एंड दिस इज अ mantle, this is a crust. तो crust where you form a plate. For example, you have two plates here. One is this and one is this. तो यहाँ पे because of earth heat यहाँ पे क्या होता है? मैग्मा होता है। मैग्मा, लावा जो भी है यहाँ पे मैग्मा होता है। तो आप ये you have one thing, you know it one thing, जहाँ पे anything which is warmer, it will go up, anything which is cool it will go down, anything which is cool it will go down. जो चीज़ गर्म होती है वो ऊपर जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक पतीले में आपने पानी बॉईल किया, तो आप पानी जब टच करके देखते हैं तो आग तो नीचे लग रही होती है ना, गैस तो नीचे जल रही होती है, लेकिन आपके पतीले में पानी गर्म ऊपर हो रहा होता है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, जहाँ पे ठंडा जो भी होता है वो डेंस होता है, वो नीचे आ जाता है, उसकी फितरत है वो नीचे आ जाता है, और जो गर्म जो भी है उसकी फितरत है वो बिकॉज ऑफ एवापोरेशन या हीट की वजह से वो ऊपर आता है, हल्का हो जाता है। जो चीज़ हल्की हो जाती है वो ऊपर आ जाती है। उस हिसाब से तो जो चीज़ ठंडी होती है वो नीचे जाती है और जो गर्म होती है वो ऊपर आती है। तो यहाँ पे जब लावा गर्म होता है तो लावा बेसिकली कैसे होता है? जब लावा गर्म होता है तो लावा क्या होता है? ऊपर आता है, ठीक है, और ऊपर आने के बाद जैसे वो ठंडा हो जाता है नीचे जाता है। तो इसी तरह से ये ऊपर नीचे एक साइकिल बनाता है। तो इस साइकिल में क्या होता है? तो यहाँ पे जब ऊपर आता है ना तो ये रप्चर हो जाता है, यहाँ पे टूट जाता है। ये क्या है? ये प्लेट है ना, ये पूरी प्लेट टूट जाती है। तो टूटने के बाद ये क्या, एक और प्लेट बन जाती है, एक और प्लेट बन जाती है। तो अब क्योंकि ये प्लेट हिल रही होती है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ का चीज़ एक्टिव है, यहाँ का जो लावा है वो एक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये इससे डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये डिवाइड हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका जो प्लेट है, जो क्रस्ट का जो प्लेट है वो मूव होता रहता है। तो यहाँ पे एंड बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट what we see here is the plate has been migrated from one place to another place. तो the migration took place here. तो इसमें जो माइग्रेशन हुआ तो वो इस इंडियन प्लेट का माइग्रेशन कहाँ पे हुआ? द लॉरेशियन प्लेट पे हुआ। तो लॉरेशियन प्लेट पे what we see, we have some evidences. Let's see the Tethys Sea. तो what we see in India, जो पैंगोंग लेक है या जो हिमालय के जो पीछे का या हिमालय के बीच का जो हिस्सा है, वो आपने देखा होगा समंदर में जिस तरह का पानी होता है, नमकीन पानी, या समंदर में जो सेडिमेंट्स होते हैं या शेल्स होते हैं, या वहाँ की जो समंदर की जो रेत है, मिट्टी है, वो जो चीज़ें हैं उसके जो एविडेंसेस हैं हमें यहाँ पे कहाँ पे? इंडिया के जो नॉर्दर्न पार्ट में, इंडिया के फॉर एग्जाम्पल हिमालय की जो पिछला हिस्सा है या हिमालय का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे मिले। तो हम ऐसे कैसे हो सकता है कि जब इंडिया यहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है? यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पे जब हिमालय बना तो वी हैव हिमालय हियर। तो हिमालय के ऊपर जो यहाँ पे लेक है, कौन सा लेक है? पैंगोंग लेक है। तो पैंगोंग लेक का जो वाटर है वो सॉल्टी क्यों है? या वाटर का जो कलर है वो समंदर के कलर का, मतलब हर चीज़ वो समंदर जैसा लगता है, तो वो ऐसा क्यों है? तो वी फाइंड दैट एविडेंसेस एंड सम मटेरियल सेडिमेंट्स विच इज बेसिकली कैन बी द पार्ट ऑफ द थेथिस सी। तो दिस इज द इमेजिनरी सी
you can say it is imaginary sea, and we don't consider it as imaginary because we have evidences of this Tethys Sea, and we have practical evidences of migration of this Indian plate to Laurentian plate, and because when Indian plate and Laurentian plate hit each other, because this plate is smaller and less denser, and this plate is heavier and more denser, तो देखो कोई भी जब एक चीज दूसरी चीज से टकराती है तो वहां पे जो कोलिजन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, एक चीज जब कोई दो चीजें आके एक दूसरे से टकराती है, जो हैवी होती है वो ऊपर होती है और जो हल्की चीज होती है वो या तो ऊपर आती है या तो नीचे जाती है. I mean it depends upon the mass and density and the speed and the entire mass itself. In this condition, after this thing took place, what happens here is in this region, because of this Indian plate and Laurentian plate collision, the mountains born here, which is called the youngest mountains of the world, or you can say we have highest peaks here, which is called the Himalayan mountains or Himalayan ranges, and different ranges. ऐसे कि we have greater Himalaya, lesser Himalaya and Zaskar ranges. We have different ranges, mountains took birth over here because of this reason. And इस reason, इसके collision के पीछे कौन सा reason है? प्लेट टेक्टोनिक्स का रीजन है. और प्लेट टेक्टोनिक्स के पीछे कौन सा रीजन है? प्लेट टेक्टोनिक्स के पीछे रीजन है जो मैग्मा और लावा और जमीन की हीट का जो रीजन है वो है. तो हियर दिस इज व्हाट इंडिया एयरबुक सेज. 4 या 5 करोड़ साल पहले ये हुआ था, कोलिजन हुआ था, जिसकी वजह से सबडक्शन ऑफ द इंडियन प्लेट, सबडक्शन मतलब इंडियन प्लेट लॉरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हुआ था, जिसकी वजह से हिमालय का बर्थ हुआ था. जैसे कि सबडक्ट होता है तो यहाँ का मास कहाँ जाएगा? जमीन के अंदर तो नहीं चला जाएगा ना, तो जाते जाते ऊपर खिसक जाता है, तो उस वजह से हिमालय बॉर्न. फॉर्मेशन द मोस्ट पिक्चरस माउंटेन्स चेन, तो यही रीजन है, तो विच इज इंडिया एयरबुक सेज. तो हियर लेट्स सी, तो वी हैव सीन द थेथिस सी इन द सदर्न ऑफ द हिमालयस. द हिमालय के जो सदर्न पार्ट में क्या हुआ था? थेथिस सी पैदा हुआ था. 4 लैंड बेसिन्स नोन एज द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. जो इंडो गैंगेटिक प्लेन को हमने देखा, द प्लेन्स आर youngest in age, highly fertile in nature, and the peninsula region posted by the rivers draining from the Himalayas and the peninsula region. We have seen this. The peninsula region is shaped like an inverted triangle and considered a storehouse of economic minerals for India. We have seen this also. So let's see river systems. The river system of India can be classified into 4 groups. What is it? The Himalayan rivers, Deccan rivers, coastal rivers, and rivers of the inland drainage basin. Inland drainage basin, इसका मतलब क्या है? The inland drainage basin. Inland drainage basin मतलब ये समंदर में नहीं गिरती, ये जमीन पे ही खत्म हो जाती है. So here what we see is the Himalayan rivers are formed by melting snow and glaciers, and therefore continuously flow throughout the years. During the monsoon months, the Himalayan receives a heavy rainfalls, due to which rivers swell and cause frequent floods. So what we see is here, India divides its rivers in 4 parts. One is Himalayan rivers. Himalayan rivers, the rivers which take birth in Himalayan region. For example, we have Indus and the tributaries of Indus, Ganga, tributaries of Ganga, and Brahmaputra, and so many tributaries of Brahmaputra. See, here Himalaya, we have Himalaya from this place to this place, up to this place. So whatever the rivers we find in this place, it is called Himalayan rivers. The Himalayan rivers, most of the time, they have more snowfall,
a more rainfall because of monsoon and western disturbance and humidity there and aquifera. Because of multiple reasons, we have more rainfall, more snowfall, and even in summer we get Himalaya get snowfall in high reaches, and it deposits the glaciers, and the glacier will melt for entire year, and the most of the river of Himalayan river are like entire year they flow. So it's because of for some certain cases, because of heavy rainfall, the Himalayan river floods heavily and swells. मतलब उसका volume of water will exceed its limit, and it make a lot of floods and other things in this region. And whatever the rivers take birth in this region is called Himalayan rivers. We have some rivers like inland rivers. For example, we have Luni, we have Mahi, we have some rivers which is inland river. तो ये क्या होता है, ये इतनी लंबी भी नहीं होती. इस water, the volume of this river water is lesser comparatively because of lesser precipitation and the more consumption and the more evaporation, and the here in this river never makes a basin because ये समंदर की तरफ जाती नहीं है. होता है ना कि बहुत सारे रिवर्स समंदर की तरफ बहती हैं. अब फॉर एग्जांपल वी हैव नर्मदा, ये यहाँ पे गिरती है, और तापी ये यहाँ पे गिरती है, एंड ऑल्सो तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, एंड ऑल्सो एंटायर गंगा प्लेन. एवरी बे ऑफ बंगाल में अपना डेल्टा बनाती हैं या बेसन बनाती हैं या अपने सेडिमेंट्स ले जाके समंदर में गिराती हैं. इनके पास इतना पानी नहीं होता, यहाँ पे पैदा भी होती हैं और यहीं पे ख़त्म भी हो जाती हैं क्योंकि इनके पास इतना पानी नहीं होता या इनकी लेंथ इतनी नहीं है, या ये वहाँ का जो रीजन है, फॉर एग्जांपल रन ऑफ कच्छ में जाती है रिवर और इतना हीट होता है और वहाँ पे इतना बड़ा रीजन है और इतना छोटा सा पानी है आके वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है. और तो ये भी एक पार्ट है जो इंडिया एयर बुक सेज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिवर्स, एंड ऑल्सो ये द गंगा, ये वाला हिमालयन रिवर्स, एंड ऑल्सो द सदर्न रिवर्स. व्हाट इंडिया एयर बुक सेज हियर, लेट्स अंडरस्टैंड. द डेक्कन रिवर्स, कोस्टल रिवर्स, and rivers of the inland drainage. Inland drainage basin, we have understood what is the inland drainage basin, जो जमीन में ही खत्म हो जाती हैं. तो Deccan rivers and coastal rivers. Let's understand what is Deccan rivers and coastal rivers. See, this is Deccan Plateau. This entire plateau is Deccan Plateau. And we have Deccan rivers. Deccan rivers are, for example, we have Godavari, we have Bhima, we have Krishna, we have Bhadra, we have Tunga, we have Kaveri, we have Palar. इतने सारे जो rivers हैं, ये सारे Deccan rivers हैं. तो in these rivers, whatever rivers we are having here is called Deccan rivers. In this region, whatever rivers we are having is all Deccan rivers. And what is coastal rivers? If these rivers, see, most of the time, the Deccan rivers, most of the time, not all rivers, most of the time, rivers take birth here in Western Ghat. And because of availability of water and aquifera and the mountain ranges of the Western Ghat and Eastern Ghat, so most of the time the southern rivers take birth here, and sometimes the few rivers take birth in middle part of this Sahyadri and Satpura ranges, at this northern the Satpura ranges, for example Narmada and Tapi. And in this region, let's understand this region, we have the coast. What is it? Coromandel coast. This is Coromandel coast, this is Konkan coast. The Western Ghat, just beside Western Ghat we have Konkan coast. In Konkan coast what we see is, यहाँ पे जो Western Ghat के जो west flowing rivers हैं, we have hundreds and thousands of rivers. So these rivers are called the coastal rivers. What is it called? Coastal rivers. तो ज़रूरी नहीं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, सी इनका लेंथ भी कम होता है. जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उसके कंपैरिजन में इनका जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनका लेंथ भी कम होता है क्योंकि ये यहाँ पे पैदा होती हैं और यहीं पे समंदर में गिर जाती हैं. तो इनका, और ये ट्रंचेस बनाती हैं, रिजेस बनाती हैं, ये डेल्टा कम बनाती हैं.
तो ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये है, इनका लेंथ कम होता है, एंड इन दिस कॉनकन कोस्ट, एंड हियर इन कोरोमंडल कोस्ट ऑल्सो वी हैव सो मेनी the coastal rivers. For example, one river take birth here in Orissa. तो this ये जो region है, तो इस region में भी बहुत सारे रिवर्स हैं जो यहीं पे पैदा होते हैं, मतलब ईस्टर्न घाट में पैदा होती हैं और कोरोमंडल कोस्ट में या कोरोमंडल इस बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है। इनका लेंथ भी कम होता है और ये शॉर्ट भी होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इनका वॉल्यूम ऑफ वाटर, मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन से 90% इनका वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कंपेयर टू ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स और द हेवी रिवर्स, इनका वॉल्यूम ऑफ वाटर कम होता है। लेकिन जो जितनी सारे सदर्न रिवर्स हैं उनका वॉल्यूम ऑफ वाटर या उनकी जो कैपेसिटी है पानी की, जो क्यूबिक मीटर में जिसको पानी को नापा जाता है, उससे उस कंपैरेटिव टू नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स इनका कम होता है, क्योंकि ये रेनफॉल पे डिपेंड होती हैं, जिसको फॉर एग्जांपल रेनफॉल पे डिपेंड होती है, और ये हिमालयन रिवर्स पे पूरे साल पानी होता है क्योंकि इसको स्नोफॉल भी मिलता है, रेनफॉल भी मिलता है उस वजह से। So we understood what is coastal rivers and rivers of the inland drainage basin. The Himalayan rivers are formed by melting snow and glacier. We have seen it at the continuous flow throughout the year, and the monsoon months the Himalayan receive very heavy rainfall due to which rivers swell and cause frequent floods. So the Deccan rivers on the other hand are rain fed and therefore the fluctuate in volume of many of these. So we have understood this. The Himalayan river systems are those of the Indus and the Ganga, Brahmaputra, Meghna system. The Himalayan rivers को क्या कहते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना सिस्टम कहते हैं. The Indus, one of the greatest rivers of the world, rises near Mansarovar in the Tibet and the flows through India and therefore through Pakistan and finally falls into the Arabian Sea near Karachi, its important tributaries. Flowing in Indian territory are the Satluj, originated in Tibet, the Bias, the Ravi. See, we have seen this when we are talk about the Indus rivers. We have seen all these things, and also we have seen Brahmaputra, Meghna is another important system. So we have seen this also, जो अलकनंदा में पैदा होती है and देवप्रयाग में गंगा पे मिले. प्रयाग मीन्स व्हाट? जहाँ पे दो रिवर आके मिलते हैं उसको प्रयाग रहते हैं, जैसे कि विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, और इलाहाबाद को प्रयागराज भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो वहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन होता है, तो उसी को प्रयागराज भी बोलते हैं. मतलब वहाँ पे 3 रिवर आती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों आके मिलती हैं, तो उसको प्रयागराज बोलते हैं. तो there are verses through Uttarakhand and Bengal, and the main course in the past takes up to which we have seen this also. Chambal, Betwa, Yamuna and Brahmaputra join the Bangladesh, and the Brahmaputra is called Sangpo. तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं. अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, ये भी हमने देखा. The principal tributaries of Brahmaputra in India, we have seen Sabansari, Barali, Dhansari. ये भी मैंने बताया था आपको क्यों इसको इसके हर सारे ट्रिब्यूटरीज पे अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न में डिस्ट्रिक्ट के नाम होते हैं. I have told you. Meghna rises in the hills in the Manipur. जो मेघना जो रिवर है वो मणिपुर में पैदा होती है. ये भी we have seen this also when I was talking about Brahmaputra. In the Deccan region, most of the major river systems flowing generally in the east fall into Bay of Bengal, and we have seen this also. The peninsula, this entire river system we have seen. The few rivers in Rajasthan do not drain into the sea. अभी हमने देखा कि ये rivers समंदर में नहीं बहते और ये वहीं पे into salt lakes मैंने आपको बताया, and sand with the outlet of besides. I have told you just now in this Luni, Manchuripan and Ghaggar, Banas, ये सारी rivers वहाँ पे होती हैं. We have seen this. Country has been divided into 20 river basins. Group river basins. 12 major rivers basins are Indus,
एक तो इंडस रिवर बेसन वी हैव अंडरस्टूड. द रिवर, व्हाट इज रिवर बेसन? फॉर एग्जांपल वी हैव अमेजन रिवर बेसन, वी हैव नाइल रिवर बेसन, वी हैव कॉन्गो रिवर बेसन. रिवर बेसन जहाँ पे एक रिवर होती है और उसके बहुत सारे पूरे ट्रिब्यूटरीज आके एक जगह जमा होते हैं, जो जितनी सारी ट्रिब्यूटरीज का एक रीजन बनाता है. अब फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड हियर, मान लो दिस इज साउथ अफ्रीका एंड दिस इज, you have some river, this is the, you know what it is, this is Congo, this is a Congo river and this is called Congo river basin. इसको Congo river basin कहता है. तो इसी तरह से जैसे कि for example we have South America, this is South America. तो वी हैव दिस, जो ब्राज़ील का जो रीजन है, या इसको हम ये भी कहते हैं अमेजन बेसन. तो इस रीजन को अमेजन बेसन कहते हैं. ये अमेजन रिवर है और इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं. इस रीजन को क्या कहते हैं? अमेजन बेसन कहते हैं. तो इसी तरह से सी इफ़ वी हैव तुंगा, भद्रा एंड कावेरी, तो ये कावेरी है. तो इस रीजन को क्या कहते हैं? कावेरी बेसन. क्या कहते हैं? कावेरी बेसन. इसको कृष्णा, तुंगा, भद्रा बेसन. और इसको इसी तरह से यहाँ पे इफ़ वी हैव गंगा, तो वी हैव सो मेनी रिवर्स ऑफ गंगा, तो दिस इज कॉल्ड गंगा बेसन. व्हाट इज इट कॉल्ड? गंगा बेसन. तो दिस आर द थिंग्स. एंड जो रिवर होती है और उसके साथ उसके जो जितने सारे ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उन सबको मिला के उसका बेसन बोलते हैं. तो गंगा बेसन या रिवर बेसन. सो दिस इज हाउ what it is saying is the comprising 12 major basins and the 18. What is it? The first river basin is the Indus. So we have Indus, the Ganga, Brahmaputra, Meghna, Godavari. Godavari is in the south and Krishna also is south and Kaveri also is south. Mahanadi, the east flowing, you can say northern part, or Pennar, the southern river, Brahmani, Baitarani, एंड इट इज़ ऑल्सो साबरमती. साबरमती से क्या याद आता है? साबरमती आश्रम, द गांधी जी आश्रम. तो साबरमती एंड गुजरात एंड माही, इट इज़ ऑल्सो गुजरात. नर्मदा, we have seen how Narmada take birth, and Narmada Tapti, each of these basins have a drainage. जो सतपुरा रेंज में पैदा होती है नर्मदा, एंड गुजरात में एंटर करके अरेबियन सी में ड्रॉप होती है, ताप्ती ऑल्सो. तो वी हैव सीन दिस रिवर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स, एंड इट एक्सीडिंग 2000 स्क्वायर किलोमीटर. The 8 composite river basins combining suitably together, all the other remaining medium drainage are of the 2000 to 20,000 square kilometer, and small rivers system drainage planning and management are सुब्रनरेखा and other small rivers. ये जो है सुब्रनरेखा, ये उड़ीसा में पैदा होती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप होती है बिटवीन सुब्रनेखा एंड बैतरनी. बैतरनी इज ऑल्सो द रिवर जस्ट बिलो द सुब्रनेखा, एंड बिटवीन महानदी एंड पेन्नार. पेन्नार कहाँ पे है? द एक्सट्रीम सदर्न, जो कावेरी से भी नीचे पैदा होती है, पेन्नार रिवर. and the south and eastern part of Penna river and east flowing rivers. तो ये east flowing rivers है. east flowing मतलब बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप होती है between Penna and Kanyakumari as a inland drainage. In Rajasthan desert we have seen that desert Ludi, Mahi, those are the Rajasthan and deserty rivers, and west flowing rivers of the Kutch and west Saraswati including Luni, west flowing rivers from the Tapi to Tadri. Tadri river कहाँ पे है? Tadri river the western घाट में है. Tadri river the southern, and it is located in somewhere in Kerala, like northern Kerala you can say. The west flowing rivers from the Tadri to Kanyakumari, जो Tadri to Kanyakumari west flowing rivers, and the minor rivers drainage into the Myanmar and Bangladesh. तो कुछ रिवर्स हैं जो बांग्लादेश में फ्लो होती हैं और म्यांमार में भी फ्लो होती है. म्यांमार जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, उस रीजन में म्यांमार इंडिया से बॉर्डर बनाता है, तो इंडिया से कुछ रिवर म्यांमार की तरफ भी बहती हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्लाइमेट एंड सीजन्स.